करेगा, हम वो भी बात करेगा। देन रेंट, लीज और ऑफिस कॉस्ट। So you are making one project for 1.5 year, 100 flats apartment, 1.5 year office rent, 1.5 year material गोडाउन में स्टोर करेगा, एक गोडाउन का लीज रेंट, एंड यू आर ब्रिंगिंग मशीनरी, concrete machine, slab, concrete mixing machine, slab बनने के लिए machine, scaffolding, timber, like that, so many things you can bring on rent basis, time to time, not throughout the length. Are you bringing slab machine during the flooring? Are you bringing scaffolding activity during excavation whenever required on rent basis, time to time rent basis? Their cost, miscellaneous expenses. Miscellaneous expenses क्या है? अरे मैसोन वर्कर्स आर वर्किंग, लेबर वर्कर्स आर वर्किंग, इनको 3 बार चाय देना पड़ेगा, एक बार ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा, नहीं होगा ये काम नहीं करेगा, क्या बोलेगा? 3 बार आप चाय नहीं सप्लाई किया, चाय नहीं सप्लाई किया, क्या बोलेगा? हम चाय ब्रेक ले लेंगे बोलेगा, 10 मिनट चाय ब्रेक ले लेंगे बोलेगा, 1 घंटा चल जाएगा चाय ब्रेक में। तो गुस्सा नहीं, अरे गुस्सा नहीं करेगा, ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था नवनीत गारू, दे आर वेरी इंटेलिजेंट जनरल्स। अरे चाय मत दे दो भैया, हम लेके हम बाहर चल के चाय पी के आएगा, 10 मिनट में आएगा, 10 मिनट 1 घंटा हो जाएगा, अरे इनका काम पूरा 1 घंटा में चल जाएगा, तो 1 घंटा और ज्यादा हो जाएगा। हर एक दिन 3 बार ऐसा होगा तो सो इंस्टेड ऑफ इट क्या करेगा? वी कैन गिव द टीना, अरे आकाश मीना, आकाश मीना, आई टोल्ड दिस वन, आई फॉलो दिस रूल, आई डोंट डू एनी वर्क, आई विल गिव टू सम ए बी सी डी, हम अच्छे से देख के चल जाएगा बस, हम कुछ भी नहीं करेगा, हम कॉन्ट्रैक्ट दिएगा। आई टोल्ड यू दिस वन ऑलरेडी, आई टोल्ड यू दिस वन ऑलरेडी। सो दैट मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड ड्यूरिंग स्लैब मेकिंग हर एक आदमी को खाना देना पड़ेगा ना, नॉट ओनली चाय, खाना भी देना पड़ेगा स्लैब टाइम में, अच्छे से खाना देना पड़ेगा, एंड आफ्टर द इनॉग्रेशन में भी खाना देना पड़ेगा। ऑल दिस कम्स अंडर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। हाँ, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी, कंप्यूटर, ऑफिस में पेपर्स रहेगा, स्टैपलर रहेगा, प्रिंटर रहेगा, कंप्यूटर्स रहेगा। अरे खाना नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा बेटा, अमन, खाना भी इंपॉर्टेंट था। So all these are indirect cost. All these are indirect cost. Electricity bill related to suno. Electricity bill related to construction activities are direct cost. Electricity bill related to office quarters. So you are making a 100 flats apartment. Around 40 people every day working. बाहर से लेके आया 40 people. You are providing them quarters. एक quarters का electricity bill indirect cost हो जाएगा. But apartment construction में उधर use करेगा that will be considered direct cost. समझ आ रहे? Understand? चलो direct cost indirect cost क्या हो गया? Total project cost. Deepak Garu, you are constructing a big structure, so you brought the materials as a lot instead of bringing every time the bricks, you are bringing 3-4 trucks of bricks, so you are loading in the godown. Instead of bringing every day 10 bags of cement, you are bringing 100 bags of cement, you are loading in the godown. एक गोडाउन को लीज को लेना पड़ेगा ना, लीज मींस रेंट है, गोडाउन को 1 ईयर को लीज और 1 ईयर को रेंट लेना पड़ेगा, दैट कॉस्ट वी कॉल इट एज। और एल्स काम करने वाला आदमी को एक लैंड ले लिया, बाजू में एक एम्प्टी लैंड है, ये बाजू में एम्प्टी लैंड लेके छोटा छोटा टेंपरेरी शेड्स बना दिया, इनको लीज को लेना पड़ेगा, ये लैंड एम्प्टी लैंड लीज को लेना पड़ेगा। So what is the difference between rent and lease? सुनो, rent lease difference क्या है? Already godown existing, you are already godown existing, you are asking them and you are taking for rent. empty आप empty land लेके आप temporary godown shed बना के बन दिया, then you are taking the land for lease. Whatever activity you can do in the land, समझ आ रहे? हाँ, portable cabins you are doing, you are making whatever activity, आप land ले लो, lease को ले लो land, 1 year को lease, this much amount I will give for your land, I can use it later on, I will leave, that is called lease. But already existing building is there, you are using, that is called rent. So total project cost is the sum of total direct cost plus total indirect cost, sum of total direct cost plus sum of indirect cost. आजकल रेंट में भी ऐसा चल रहा है, पीपल आर नॉट बिलीविंग नवेडेज, बदमाश लोग आता है रेंट के लिए, रेंट में भी रेंटल एग्रीमेंट चल रहा है आजकल, देबू मालिया, बदमाश लोग, मंतोष कुमार पुरस्कार आएगा ना। टोटल डायरेक्ट कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन number of activities, depending upon number of activities and its cost, total direct cost. Indirect cost is indirectly to Jedgar, okay? आपको खुद से कच्चा बना लिया मंतोष, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, जेड को भी कच्चा कर दिया, इंडायरेक्ट कॉस्ट। सो मंतोष गारू स्टेइंग इन हॉस्टल, सुनो बेटा, मंतोष गारू स्टेइंग इन हॉस्टल, हिज फादर एवरी मंथ हिज फादर इज सेंडिंग 5000 रुपीस। आफ्टर 3 months मंतोष गारू बोला हमको 5000 रुपीस नॉट सफिशिएंट, कच्चा ज्यादा हो रहा है, 8000 बना लो। ओके, हिज फादर फेल्ट दैट, अरे अच्छा आदमी था, 8000 भी पूछ लिया, 10000 नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, 8000 सेंड कर रहा है। क्या हो गया, क्या हो गया? एक्चुअली मंतोष गारू को सिर्फ 5000 ओनली, 3000 इज फॉर जेड, 3000 इज फॉर जेड। सो फॉर मंतोष फादर को बताओ डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? मंतोष फादर को डायरेक्ट कॉस्ट 5000 ओनली, इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया 3000 रुपीस, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया 3000 रुपीस। समझ आ रहा है? दैट इज द डिफरेंस। सो nowhere related, indirect cost nowhere related with any of activity,
with any of activity and cost. Activities, ये activity complete करने के activities and activity complete करने का cost not at all related indirect cost. Purely activity oriented activity, its the time and its cost required, that is total direct cost. Nowhere related with any of activities and cost, indirect cost. समझ आ रहा है? What you can do, मंतोष गारू होगा तो 5000 कम नहीं करेगा, but 3000 में एक महीने 2000 खर्चा करेगा, एक महीने 1500 खर्चा करेगा, एक महीने 1500 खर्चा करेगा, ये कम करने का कोशिश करने के बाद जीरो भी खर्चा करेगा. So he can reduce it ना, he can reduce it, possible हो जाएगा, but he can't reduce this, he can't reduce this. समझ लो बेटा, please understand this. So we can't reduce. Direct cost is must required. I will take screenshot and I will give it to your father now. अरे मेसी अंकल एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, संतोष गारू का फादर को पोस्ट करेगा हम. अंशु का पास नंबर है ना, अंशु का पास नंबर है, हम नंबर ले लेंगे आज नंबर ले लेंगे अंशु से. बर्बाद हो जाएगा मंतोष गारू. Direct cost is must required. Indirect cost should be minimized. So possible होगा तो minimize करेगा, ऐसा minimize करेगा. ऑफिस में 4 आदमी स्टाफ है, 2 आदमी ले लो, 2 आदमी को निकाल दो. वॉचमैन 10,000 दे रहा है और एक वॉचमैन को लेके आओ 5,000 में, ये 10,000 वाला दूसरा जगह को भेज दो, कम हो जाएगा. बिकॉज दोज आर नॉट कंपल्सरी रिक्वायर्ड पीपल. हम मैसोन, चीफ इंजीनियर, सब इंजीनियर को कुछ नहीं करेगा, बट दीज पीपल वी कैन reduce them. So indirect cost should be minimized. Direct cost is must required. So we can make like here, we can calculate at the end. Indirect cost is calculated as cost per project duration. For example, your project duration is 12 months. So 12 months office rents plus 12 months office staff salaries plus 12 month watchman salary, 12 month office electricity bill, like that we can calculate. So every month को cut करेंगे ना. So we can say total indirect cost per month into number of months of project. Indirect cost per month ऐसा बोलेगा, indirect cost per unit time, per month क्या है, per unit time into project duration. If you are going to finish project instead of 12 months, 10 months में क्या हो जाएगा? 10 months में आप प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, that 2 months indirect cost is profit only ना. प्रोजेक्ट 12 months का बाद 14 months कर लिया, that 2 months indirect cost is loss only ना. Because whatever the project duration, the number of people working, number of days working, whatever it, total direct cost में कुछ change नहीं हो जाएगा. 12 months में करने वाला काम 14 months में कर दिया, total direct cost you are going to limit. Are you going to increase material? Are you going to increase the cement quantity? Are you going to increase the brick quantity? Are you going to increase the timber quantity? No. Nearly total direct cost is same. You may finish in 12 months, you may finish in 14 months, you may finish in 15 months. But indirect cost तो क्या हो जाएगा? 12 month में करने के बाद, 14 month में करने के बाद बढ़ जाएगा cost, because additionally you have to pay 2 months extra office rent, additionally you have to pay 2 months extra watchman salary, additionally you have to pay employee salary. So indirect cost is related to project duration, total project duration. Total indirect cost is equal to indirect cost per unit time into project duration. This is very simple example. I will tell you. अच्छा गारू को बहुत अच्छा मालूम था. This one, car rental service. मिस्सी अंकुल इनका जड के साथ गोवा चलने के लिए कार रेंट को ले लिया मिस्सी अंकुल. कार रेंट पर डे कार रेंट बोल रहे, per day it is 500 rupees is rent. 500 rupees per day is rent. Then he may travel 1500 kilometers in 5 days. Okay, he may travel 1500 kilometers in 10 days. ये 1500 किलोमीटर चलने के लिए फ्यूल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट ना, फ्यूल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट, इट इज कांस्टेंट. इज इट वेरिंग? बट सेम 1500 किलोमीटर के लिए रेंट 2500 रुपीस हो जाएगा, इधर रेंट 5000 रुपीस हो जाएगा. ये बढ़ जाएगा ना कॉस्ट, इंडायरेक्ट कॉस्ट. सो दैट ही कैन सेव सम अमाउंट इफ ही फिनिश इन 5 डेज. 5 डेज में खत्म करने के बाद क्या हो जाएगा? बताओ, ये समझ आ रहा है बेटा? देन कार रेंट ओके, ड्राइवर सैलरी per day 1k per day. Again that is also getting saved. He is finishing the work in 5 days. 5 days को ड्राइवर को इधर 5000 रुपीस दे रहे हैं, 5k दे रहे ड्राइवर को, इधर 10k दे रहे हैं. So total 15,000 here, 7,500 here, 7,500 रुपीस टोटल सेव हो गया. All these are indirect. So you are finishing in 10 days. Is there any reduction in fuel cost? कुछ fuel cost कम हो जाएगा क्या? Fuel cost constant रहेगा ना, सेम रहेगा. But indirect cost, ड्राइवर सैलरी, कार रेंट, ड्राइवर का खाना, मिस्सी का स्टे करेगा ना, अगेन 10 days he want to stay in hotel rooms. Here 5 days होटल रूम में स्टे करना पड़ेगा पहले काम में, नेक्स्ट एक्टिविटी में 10 दिन, अगेन 5 days एक्स्ट्रा होटल रूम कास्ट हो जाएगा. ही कांट स्टे इन कार ओनली, प्लीज स्टे इन कार ओनली, कार में नहीं रहेगा. अगेन 10 days बाहर चलने के बाद ही हैज टू स्टे, अगेन दैट आल्सो विल इंक्रीज. ऑल दिस बिकम इनडायरेक्ट कॉस्ट. सो मिस्सी गारू शॉर्ट ट्रिप बनाओ, जल्दी खत्म करो. विजिटिंग जल्दी खत्म करने के बाद शॉर्ट ट्रिप में इतना पैसा सेव हो जाएगा और दूसरा ट्रिप भी चलने का मौका मिलेगा आपको.
एक ट्रिप का कास्ट में 2 ट्रिप चलेगा मेसी अंकुल? So you, what is the final objective here? What is the final objective? During crashing, consider to reduce duration of project. So project duration कम हो गया. So indirect cost reduces. Project duration reduces. But not at the cost of, but not at the expense of, very important, increase of direct cost. You are reducing more and more. Direct cost increase हो जाएगा ना. So मेसी गारू को ऐसा बोल दिया हम, then मेसी गारू सोचेगा अरे 5 days में 1500 क्या है, 3 days में 1500 करेगा और ज्यादा सेव करेंगे. Then now he has to go very fast. सुपर फास्ट में चलने के बाद माइलेज कम हो जाएगा. सुपर फास्ट में चलने के बाद माइलेज कम होने के कारण से फ्यूल कास्ट इंक्रीज हो जाएगा, फ्यूल कास्ट बढ़ जाएगा. देयर इज नो यूज ऑफ इट. यस सर नो, समझ आ रहा है बेटा? If it is 5 days 15 किलोमीटर ओके, 10 days 15 किलोमीटर ओके, there is no change in fuel cost is constant. But 3 दिन में 1500 किलोमीटर, हर एक दिन 500 किलोमीटर होगा तो बहुत ज्यादा स्पीड में चलना पड़ेगा. Then that leads to increase of speed, decrease the mileage. माइलेज कम होने के कारण से फ्यूल कास्ट इंक्रीज हो जाएगा. What is the use of saving money? गाड़ी बर्बाद करने के बाद मेसी गारू पे करना पड़ेगा गाड़ी का कास्ट भी, रिपेयर कास्ट भी गाड़ी को मेसी गारू पे करना पड़ेगा. Then what is the use? So not at the expense of increase of direct cost. डायरेक्ट कास्ट को चेंज मत करो, समझ आ रहा है? डिक्रीज इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन करो, इनडायरेक्ट कास्ट रिड्यूस करो. सो डायरेक्ट कास्ट को इतना ज्यादा इंक्रीज मत करना पड़ेगा. अंडरस्टैंड दिस गाइस? So what we can say from this, indirect cost directly proportional to time. That is only ना. If you take car rent for 5 days, 10 days, 20 days, ये बढ़ जाएगा, ड्राइवर सैलरी बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा. इनडायरेक्ट कास्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. Draw the curve. Indirect cost versus the time. This is a linearly increasing curve only. This is indirect cost curve. What happened to indirect cost curve? Linearly related, linearly directly proportional. We have written already formula, देखो एक बार समझ आएगा. Indirect cost per unit time into time, project duration. Total indirect cost हो जाएगा. Indirect cost curve, indirect cost versus time is a linearly increasing curve. चलो. So we'll continue the remaining tomorrow. We will discuss the most important part. हाँ खत्म हो गया बेटा मंतोष. Anything more you want to talk? मेसी गारू रेस्ट ले लो ना. No, today 2 o'clock there is no session. 9:30 very important for gate and ESE also. 2 p.m. रेस्ट ले लो, मेसी गारू को तबीयत अच्छा नहीं है, so 2 बजे आज रेस्ट ले लो. Okay, 9:30 concrete is the most important which is required. समझ आ रहा है बेटा? डिप्रिशिएशन कास्ट एस्टिमेशन हो लेना, कास्ट एस्टिमेशन करेंगे इस कोर्स में. अरे वाव बोल रहे मंतोष, मेसी जी को तबीयत खराब होगा तो वाव बोल रहे, थप्पड़ देना पड़ेगा आपको. So please understand guys. चलो we'll meet 2 बजे मिलेंगे. बाय बाय.